Hi students, today we are going to solve question number 7 of page number 59. If you see what you are to find, you have to find out gross profit and net profit only. So gross profit and net profit you get in trading account and profit and loss account. So you will not prepare partners capital account and balance sheet. You will prepare only trading account and profit and loss account. So before listening to the audio and video, draw column of trading account and profit and loss account. Before starting the audio to listen, you make trading account and profit and loss account. Okay, so prepare the trading account and the profit and loss account. Satish and Pramod are partners. Prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. So first you have stock 1/4/2018. It is written as 218. It is 2018. It is opening stock. Opening stock will appear in trading account debit side. Stock trading account debit side 8,700. Purchases trading account debit side 18,300 in the inner column. Purchases 18,300 in the inner column minus purchase return purchase return is on the credit side given as 500. So 18,300 minus 500, 18,300 minus 500 will give you 17,800. Then you have wages trading account debit side 2 wages trading account debit side 1,000 in the inner column. 2 wages 1,000 in the inner column. Wages 1,000 in the inner column. Insurance wages, after that you have insurance in profit and loss account debit side 2 insurance profit and loss account debit side 2 insurance 800 rupees. 2 insurance 800 rupees. Unproductive wages profit and loss account debit side unproductive wages profit and loss account debit side 1,400. Unproductive wages 1,400. Warehouse rent 600 profit and loss account debit side. Warehouse means go down. Warehouse rent profit and loss account debit side 600. Carriage outward
Profit and loss account debit side, carriage outward. Profit and loss account debit side 1200, 1200 carriage outward. Sales return, credit side of trading account. First you write by sales minus sales return, by sales minus sales return, which comes to 600. The sales return is 600. You will write later the sales. When it comes that time you will write the sales amount. Then export duty, profit and loss account debit side, export duty amount is 1400. Customs duty 800, profit and loss account debit side. Custom duties, profit and loss account debit side 800. Sundry debtors you will not record as we are not preparing the balance sheet, so sundry debtors will not be recorded. Investment we are not going to record as it has a place in balance sheet asset side. Factory rent trading account debit side, factory rent trading account debit side 1600. Factory rent 1600, profit trading account debit side. Postage and telegram 400, postage and telegram 400. It is in profit and loss account debit side. Come to credit side, we have sales, 68,000. Sales we have 68,000. So by sales 68,000 minus return 600, which is already written. So 68,000 minus 600 will give you 67,400. Then you have dividend. Dividend is the income what you get on investing money in shares. When you invest money in shares, in return you will be getting dividend. It's an income. So profit and loss account credit side 2,000 rupees. Purchase return we have already written in the trading account debit side. Sundry creditors we are not going to write as we are not preparing balance sheet liability side. 10% bank loan. See, you will have a working note over here. Take up working note number 1. See, bank loan has a place in balance sheet liability side, so we are not going to record the 10% bank loan. But आप लोन लिया है, you have taken a loan, so on that loan you have to pay the interest, which is a hidden adjustment which has two effects. We have to pay the interest on bank loan. So take up third page, working note number 1. Working note number 1, interest on bank loan. Interest on bank loan. Your loan amount is 8,000. 8,000 into rate of interest 10%, it is 10 upon 100. 8,000 into 10 upon 100. This loan you have taken from 1st July. This loan is taken from 1st July. So from 1st July, if you count the number of months, it comes to 9 months. So 8,000 into 10 upon 100 into 9 by 12.
The loan amount is 8,000. 8,000 multiplied by rate of interest 10%, 10 upon 100 multiplied by 9 by 12. On solving this, you will be getting 600 rupees. 8,000 into 10 upon 100 into 9 by 12. So on 110, then 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 2s are, it comes to 600 rupees. First effect will be shown in the balance sheet liability side. First effect will be shown in the balance sheet liability side. Second, if first, anyway we are not making a balance sheet, so we will not give the first effect. Second effect, profit and loss account debit side. Second effect, profit and loss account debit side. Right there, 2 interest on bank loan. 2 interest on bank loan, 600 rupees. Okay, so then other receipts, it's also income. Receipts का मतलब होता है income, it is a income. So income we write in profit and loss account credit side by other receipts. Right, by other receipts 1,000 rupees. Okay, now we come to adjustment number 1. The closing stock is valued at 15,400. Closing stock is given as 15,400. इसका first effect ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,400. बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,400. Second effect we write in balance sheet, but we are not preparing the balance sheet. Second adjustment, outstanding wages rupees 500. So outstanding wages is rupees 500. तो outstanding है, it is outstanding. So first effect, trading account debit side में जहाँ पर आपने wages लिखा है, so wages आपका है 1,000, उसमें आप ऐड करो, ऐड outstanding wages 500. 1,000 plus 500 will give you 1,500. आउटर कॉलम में लिखो 1,500. 1,000 plus 500 will give you 1,500. Second effect you will show in balance sheet liabilities, but we are not preparing a balance sheet. Then third adjustment, but before solving third we have to solve the first fifth adjustment. तो आप लीजिए वर्किंग नोट नंबर 2. राइट द डेटर्स अमाउंट. योर डेटर्स अमाउंट इज 40,000. ओके, तो डेटर्स आपका 40,000 है. उसमें सबसे पहला आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है? गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019, बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 का गुड्स सोल्ड हुआ है, लेकिन उसका बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है. तो सबसे पहला इफेक्ट आप डेटर्स में ऐड करो. डेटर्स में वर्किंग नोट में वहाँ लिखो अनरिकॉर्डेड सेल्स, या आप वर्किंग नोट में लिखोगे. दिस यू राइट इन द वर्किंग नोट. डेटर्स लिखो 40,000, उसमें आप प्लस करो अनरिकॉर्डेड सेल्स 2,000, प्लस करके नीचे लेके आओ, इट कम्स टू 42,000. इसका सेकेंड इफेक्ट अगर आप देखोगे सेल्स में जाइए, आपका ऑलरेडी सेल्स है. बाय सेल 68,000, उसमें से माइनस किया रिटर्न 600, कितना मिला 67,400. इसमें आप ऐड करो अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अनरिकॉर्डेड सेल्स.
2000. सो 67,400 प्लस 2000 कितना देगा? 69,400 देगा. 67,400 प्लस 2000 कितना देगा आपको? 69,400 देगा. ठीक है. आई रिपीट वंस अगेन. आप तो वापस रीड कर सकते हो उसको. तो पहला इफेक्ट आपने डेटर्स में ऐड किया वर्किंग नोट में, और सेकेंड इफेक्ट आपने उसको दिखाया है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स में ऐड किया है 2000. देन वी राइट द थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. ये बैड डेब्ट है. तो बैड डेब्ट क्या होगा? आप वर्किंग नोट में लिखो डेटर से माइनस करो न्यू बैड डेब्ट्स. डेटर से माइनस करो न्यू बैड डेब्ट्स विच इज 800. माइनस किया 41,200 आएगा. इसका सेकेंड इफेक्ट आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. वापस से सुनो. 42,000 आपका डेटर में से, आप डेटर में आपने ऐड किया अनरिकॉर्डेड सेल्स, आपको मिला 42,000. उसमें से आप माइनस करोगे न्यू बैड डेट 800 रुपीज़, विल गिव यू 41,200. इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. अगर आपने फॉर्मेट नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो आप लिखो पहले 2 न्यू बैड डेट्स 800 इनर कॉलम में लिखो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो 2 न्यू बैड डेट्स 800 इनर कॉलम में लिखो. फिर कम टू द वर्किंग नोट. डेटर्स में से अब माइनस करो न्यू आरडीडी. अब माइनस करो न्यू आरडीडी. न्यू आरडीडी इज 3%. सो जो 41,200 है उसका 3% निकालो. जो 41,200 है उसका 3% निकालो. 3% निकालने पर इट कम्स टू 1236. सो 1236 माइनस करो. समझ में आ रहा है? तो 1236 का आपका न्यू आरडीडी है. इसका सेकेंड इफेक्ट आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो. जहाँ पे आपने न्यू बैड डेट लिखा है उसमें आप न्यू आरडीडी ऐड करो 1236. उसमें आप ऐड करो 1236. तो कितना मिलेगा आपको? 2036. ये आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो. जहाँ पे आपने न्यू बैड डेट लिखा है 800 उसमें आप ऐड करो 1236. तो कितना आएगा? 2036. Then the fourth adjustment, goods of rupees 1,800 distributed as free samples. Goods of rupees 1,800 distributed as free samples. इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बाय goods distributed as free samples 1,800, and we are distributing goods free sample. We are distributing the goods for free sample for advertisement. So 1,800 is distributed as free samples. इसको आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे 2
advertisement, because we are distributing goods free of cost for advertisement. Okay, so with this we end up this sum. Then you close the trading account. You will get gross profit. Transfer the gross profit to the profit and loss account. You will get the net profit. Okay, so thank you, student.